Now, days after wrestlers protest against the former Wrestling Federation of India chief Brij Bhushan Sharan Singh, Delhi police has assured the Supreme Court that an FIR will finally be filed in the alleged sexual harassment case. Now, this comes after, in the last hearing, the Supreme Court had issued a notice to the Delhi police seeking a report of the same. Now, in the backdrop of this very assurance by the police are various athletes putting their weight behind the wrestlers. From Olympic medalist Neeraj Chopra, boxer Nikhat Zareen to tennis star Sania Mirza, they have all backed the wrestler in their tirade against Brij Bhushan Sharan Singh and the rut that runs deep within the Wrestling Federation of India. However, in the midst of the high was a huge dissenting voice in the Indian Olympic Association president PT Usha, who said that the protest on the street by the athletes amounts to indiscipline and is tarnishing the country's image. Now, the wrestlers found the statement by Usha very unfortunate, even more so since it came from a woman. They have also claimed that despite trying to contact PT Usha several times, she never answered the wrestlers' calls. And the latest addition to this entire wrestlers versus WFI saga is the political bigwigs throwing their hats into the ring, with the Congress, the Aam Aadmi Party and the Trinamool Congress now offering support to the wrestlers. Now, we are asking on the broadcast today, when it is about the wrestlers versus WFI battle, let me break down this entire saga, what really has happened and what really is the timeline to this entire fiasco. It all started 3 months back this very year in January, where on January 18th, the wrestlers accused the WFI boss, Brij Bhushan Sharan Singh, of sexually exploiting female wrestlers. Now, 2 days later, on January 20th, the Sports Minister, Anurag Thakur, formed an oversight panel and he said that the WFI chief will be stepping aside. The same day, the wrestlers called off their stir after assurances from the government were given. Remember, they were the ones who had actually reached the Jantar Mantar in the national capital protesting against the WFI chief over the sexual harassment allegations. Now, on January 21st, Brij Bhushan Sharan Singh rejected all of these allegations and he stepped aside as the WFI chief. Later, on February 23rd, the oversight committee that was formed got 2 more weeks to submit the report. So far, there was no report filing that had been done, so an extension of 2 more weeks was given to the oversight committee. Now, on February 28th, Brij Bhushan appeared before the government-appointed panel and rejected all of the allegations that were made against him. Later, on April 23rd, this month, is when the wrestlers decided to resume the protest, demanding the release of the panel report because that report was never made public. On April 24th, the wrestlers then moved the Supreme Court, seeking the registration of an FIR against Brij Bhushan Sharan Singh, which the police had refused back then. On April 26th, the Supreme Court issued notice to the Delhi police on the petition that was filed by the wrestlers. And today, on April 28th, the Delhi police assured the Supreme Court that they will in fact be filing a complaint against Brij Bhushan Sharan Singh. Now, I was telling you earlier how several Indian sports stars have spoken up for the wrestlers. Tokyo gold medalist Neeraj Chopra has demanded an impartial and transparent probe into this issue. India's first individual Olympic gold medalist Abhinav Brindra has also backed the wrestlers, and he said that their concerns should be addressed fairly and independently. Tennis icon Sania Mirza too has spoken in support of the wrestlers. She's tweeted, and I'm quoting from her tweet, "It's time to stand with the wrestlers." Boxing champion Nikhat Zareen has also lent her voice to the wrestlers, saying that justice should be served at the earliest. India's World Cup winning former captain Kapil Dev has also showed his support and also his angst for the wrestlers. He's asked on Instagram, will they ever get justice? So we are asking today, the wrestlers versus WFI saga, will the dangle of this entire matter, the truth of this dangle really come out? फेडरेशन के अध्यक्ष ही ऐसे शोषण करते रहेंगे तो किसके पास क्या लेके जाए खिलाड़ी? उनसे बड़ा तो उस फेडरेशन में कोई नहीं है। तो मुझे लगता है कि दिल्ली पुलिस को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, उनको जेल में डालना चाहिए जल्दी से जल्दी। दिल्ली पुलिस पे हमें अभी भी ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि वो कोई भी क्योंकि हम
6 दिन से यहाँ बैठे हैं, तो FIR करने में इन्होंने इतना टाइम लगा दिया है। तो वो ट्रस्ट जो बिल्ड होना चाहिए तो वो उन्होंने पहले ही हमारा तोड़ दिया है, और वो लूज FIR कर सकते हैं, इसका भी हमें अंदेशा है। They should come to us earlier if they have a real problem. Instead of coming to us, they are gone straight away to street. No, it is not good for the sports, not only for the residents. अब कंप्लेंट करने वाले कमेटी नहीं बनाते, लेकिन सरकार को बनानी थी, हमने बनाई। उन्होंने कहा एक बंदा और ऐड की, उन्होंने बबीता फोगाट का नाम दिया, हमने उसको भी ऐड करने का काम किया। हमारे मन में कुछ नहीं, हम निष्पक्ष जांच चाहते थे, ओवरसाइट कमेटी उसके बीच में देखी, उन्होंने देखने का काम किया। लेकिन पुलिस भी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करती, दिल्ली पुलिस ने कहा प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करेंगे और जो उसमें आता है उसके बाद अगली कार्रवाई करेंगे। क्या कारण है, क्या मजबूरी है, क्या व्यवस्था है, सरकार बताए। अपने दोषों को और अपने अपराधों को झूठ से दबाया नहीं जा सकता। Now, before I bring in my guests on the broadcast, let me also tell you that CNN News 18 has spoken exclusively to the person who is currently in the eye of the storm. Let's listen in to what Brij Bhushan Sharan Singh, the former boss of the Wrestling Federation of India, had to say about the FIR and the protests against him. नहीं, ये मेरे सपोर्ट में कोई नहीं आया है। देखिए, ये मेरे सपोर्ट में कोई नहीं आया है। मेरा प्रश्न इतना है, न्यायपालिका के निर्णय से मैं पूर्णतया संतुष्ट हूँ, पुलिस की कार्यप्रणाली से मैं पूर्णतया संतुष्ट हूँ। जांच में जहां भी सहयोग की जरूरत पड़ेगी, मैं पूरी जांच में सहयोग करूंगा। यही मेरा अंतिम बयान दर्ज किया जाए। Let me bring in my guest now. Rakesh Singh, who's the coach and general secretary of Haryana Wrestling Association, is with us, and also with us is Jagmati Sangwan, who's a former volleyball player and also VP of All India Democratic Women's Association. Former athlete Amit Khanna is also going to be joining us on the broadcast a little later. But before we do that, before we have Amit Khanna, let me actually bring Rakesh Singh first. Rakesh, we've just heard that statement that is being made by Brij Bhushan Sharan Singh. There is an FIR that's been now registered against him. He's saying that he is going to be cooperating with the agencies. But in all the statements that he has made before the oversight committee, before the ad hoc committee, he has claimed innocence. What do you actually have to say about this entire saga that is being playing out since the last 3 months? Rakesh. Rakesh, are you able to hear me? Rakesh ji, sun pa rahe aap mujhe? I don't think my audio is through with Rakesh. Let me bring Jagmati. Jagmati, would you like to first respond to the question that I posted? Yes, I want to say that this is a test case for the issue that the sexual assault cases are being handled in our country the way earlier when the athletes went to the sports ministry and the Indian Olympic Association with their complaints. They constituted the committee, and the committee said there is no complainant and there was no sexual assault as such. What we have been listening during this time. But now, on the intervention of Supreme Court, the Delhi police, they have agreed to register an FIR. So, if there is a need of going to the Supreme Court for registering and just an FIR, what about the justice? And that also in the case of those sports icons who have brought laurels to our country. They since 3 months they have been raising their voice, and after 3 months they have got just the FIR being lodged on the instructions of Supreme Court. So the state and its agencies are not following the laws.
which have been framed to protect women against the sexual assaults. तो जागमती, राकेश जी हमारे साथ आ चुके हैं। राकेश जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आप? हाँ जी मैडम, नमस्कार। राकेश जी, जो पॉइंट जागमती अभी बता रही हैं कि एक इंटरनल्स कंप्लेंट कमेटी जो कंप्लीटली मिसिंग था इस पर्टिकुलर केस से फ्रॉम द वर्ड गो, जिसकी वजह से जितनी भी फीमेल रेसलर्स थी वो अपना कंप्लेंट सही तरीके से दर्ज नहीं कर पाई और ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ। उसके बाद एक कमेटी, ओवरसाइट कमेटी रखी गई, एक एडहॉक कमेटी रखी गई, लेकिन ओवरसाइट कमेटी की रिपोर्ट तक सामने नहीं आई है। इतनी ज्यादा डिस्क्रिपेंसीज क्यों है इस केस में, आपको क्या लगता है? देखिए मैडम, आज जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है एफआईआर लॉन्च करने का जी, इससे हम पहले भी नहीं भागे। हमने बोल दिया था एफआईआर लॉन्च होनी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। आज पहलवान कह रहे हैं दिल्ली पुलिस पे हमारा कोई भरोसा नहीं है। पहले ओवरसाइट कमेटी बनाई, उस पे इनका भरोसा नहीं था। इन्होंने जो कह दिया वो सत्य है, बाकी सब झूठ बोलते हैं। ये पहलवान राजनीति के शिकार हैं। इसमें जगमती बहन हो या ये पहलवान हो, ये राजनीति के शिकार हो गए हैं। आज इनको ब्रिज भूषण से भी मतलब नहीं रहा। अब ये कह रहे हैं हर खेल की फेडरेशन को भंग करो और सभी को अलग अलग दोबारा से पहलवानों को और एथलीट्स को अलग अलग फेडरेशन के प्रधान बनाएं। ये जो कह रहे हैं वो सत्य है, बाकी सब झूठे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ, लेकिन राकेश जी अभी तक ऐसी तो कोई बात हुई नहीं है। अभी तक ऐसी कोई बात नहीं हुई है। ये जो पॉलिटिक्स की बात आप कर रहे हैं राकेश जी, ये जो पॉलिटिक्स का शिकार हो गए हैं रेसलर्स, जो बयान आप दे रहे हैं ये किस बेसिस पे दे रहे हैं? किस तरह की पॉलिटिक्स की आप बात कर रहे हैं? जो पोजीशन की आप बात कर रहे हैं वो पोजीशन की बात तो रेसलर्स ने अभी तक करी नहीं है। जिस दिन से भूपेंद्र हुड्डा का बेटा हमारे ब्रिज भूषण शरण जी ने 2 बार हराया उनको और वो हरियाणा के प्रेसिडेंट रहे, जिस दिन से उनको हटाया उसी दिन से तो ये आग लगी है। और 11 साल हो गए इन पहलवानों को कैंप में रहते हुए, इन लड़कियों को आज तक कोई कंप्लेंट नहीं थी। जब इलेक्शन का टाइम आया तो ब्रिज भूषण में 100 खामियां निकलाई और ये कह दिया। The audio seems to be a problem with Mr. Rakesh. Jagmati ji, ये जो point Rakesh ji बता रहे थे, how would you like to respond to that? You know, there has been a 3-year continuous tenure that Mr. Brij Bhushan Sharan Singh has enjoyed since 2011. Why make the complaint now? And this is the allegation that has come to fore from his side. Yes. These girls spoke about this sexual assault 3 months earlier. And since then also, what is the progress on the part of government? वो तो बिल्कुल जो परफॉर्मेंस के नाते तो बिल्कुल जीरो है और जो अहंकार है वो हीरो की तरह है। अभी जो राकेश कह रहे हैं कि हरियाणा के अंदर ये जो एसोसिएशन का इन फाइटिंग है, कब्जे की बात है, no, this is not the case. Actually, 7 of the wrestlers have come out to complain for sexual assault, and the Supreme Court of this country has seen some facts in those allegations, and that is why the Delhi police has been instructed to register an FIR. But still, Rakesh is secretary of Haryana Wrestling Association. And what I see that he still disbelieves what is going on in this case. With this attitude, नहीं, जो allegations राकेश जी लगा रहे हैं, आप उसके बारे में क्या जानकारी दे सकती हैं जगमती जी? वो ये कह रहे हैं कि पॉलिटिकल एस्पिरेशंस है रेसलर्स की, उनका अल्टीरियर मोटिव है जिसकी वजह से वो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 2011 से WFI के प्रेसिडेंट रह चुके हैं ब्रिज भूषण शरण जी, तब ये एलिगेशन सामने नहीं आई। उसके बाद टोक्यो ओलंपिक्स के बाद जब विनेश फोगाट प्रधानमंत्री से डायरेक्टली मिलके डिस्क्रिपेंसीज विद इन द रेसलिंग फेडरेशन की बात करने गई, उसके बाद उन्होंने ये एलिगेशन लगाया था कि उनको डेथ थ्रेट्स भी मिले थे ब्रिजभूषण शरण के गूंज के द्वारा। तो ये बढ़ता ही गया उसके बाद। इस एलिगेशन को कैसे आप देखती हैं? देखिए, चाहे किसी की भी पॉलिटिकल एस्पिरेशंस हो सकती है, ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, ऑल आर फ्री टू have their own aspirations and get those fulfilled. But at the same time, we are concerned about the allegations being made by these 7 girls.
in this particular case, there is a minor also. Yes. The POCSO provision should have been implemented in her case. सारा जो मसला है उसमें जो कानून व्यवस्था है असल में उस कानून व्यवस्था की वायलेशन सभी एजेंसीज के द्वारा की जा रही है। जी राकेश जी, आप इसका जवाब देना चाहेंगे? बिफोर आई गेट अमित ऑल्सो हियर, ये एलिगेशन बोला जा रहा है कि जो लेट मी कंप्लीट माय क्वेश्चन राकेश सर, ये बोला जा रहा है कि कुछ माइनर्स हैं उस जिन्होंने कंप्लेंट दर्ज की है ब्रिज भूषण शरण के खिलाफ, ये एलिगेशन आ रही है कि उनकी आइडेंटिटी रिवील करने के लिए उनको फोर्स किया जा रहा है, कोर्ट को बोलना पड़ा पुलिस को कि उनको प्रोटेक्शन ऑफर की जाए। ये सारे एलिगेशंस कैसे देखते हैं आप इसको? मैं बताता हूँ, ये सारा षड्यंत्र है। जिस दिन फरवरी 18 को जब ये लोग धरने पे बैठे थे, Well, the link with Mr. Rakesh seems to be a problem. Let me bring in Amit Kharna, former athlete who's now joined us on the broadcast. Amit, you've been having a bird's eye view of what this entire controversy is all about. It's very, very sad that our wrestlers who have won laurels for our country are sitting on dharna for so many days now. And even after 3 months, their entire complaint hasn't really been dealt with an iron hand. How do you see this entire fiasco playing out? See, my submission as an athlete is that why athletes are on the grounds, on the streets, especially when it is the Asian Games peak time. When the Asian Games peak time and athletes really need to be on the sports ground, they are spending time on the streets, and not one, two. There are a number of Pahalwans who are on the street. There has to be a reason. Yes. And I just want to understand, okay, if Rakesh ji कह रहे हैं कि ये षड्यंत्र है, politics है, तो इन्वेस्टिगेशन करने में क्या प्रॉब्लम है? वी कैन इन्वेस्टिगेट दिस होल प्रोसेस। 3 महीने हो गए, आपने एक कमेटी बनाई, उस कमेटी की क्या रिपोर्ट सामने आई है? नोबडी नोज व्हाट हैज कम आउट ऑफ इट, एंड रेसलर्स आर बैक इन। इस समय एशियन गेम्स आर राइट देयर इन अक्टूबर। वी आर होपिंग दैट आवर रेसलर्स गोना गेट जस्टिस एंड वी गोना गेट मेडल्स फॉर द कंट्री। एंड आई थिंक द गवर्नमेंट हैज टू अंडरस्टैंड कौन लोग बैठे हैं सड़क पे। ये वो लोग बैठे हैं जिन्होंने देश के लिए लॉरल्स लेके आए हैं, देश के लिए मेडल्स लेके आए हैं, अवार्ड्स जीते हुए हैं देश के लिए। Such people with such credentials are on the street, and we cannot even have a fair investigation. क्या वेट कर रहे हैं, किस चीज की वेट कर रहे हैं? I think we should have a fair investigation as soon as possible, and we should make sure that these wrestlers are back onto their stadiums to practice and win medals for the country. Absolutely. राकेश जी, आप जवाब देना चाहेंगे? बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। साहब का मैं जवाब दे रहा हूँ जी। देखिए, इन पहलवानों ने जो शिकायत दर्ज कराई, वो माननीय स्पोर्ट्स मंत्रालय ने एक ओवरसाइट कमेटी बनाई, उनमें सारे स्पोर्ट्समैन ही रखे गए। शिकायतकर्ता की बहन को जज बनाया गया, और उसके बाद भी ये संतुष्ट नहीं है। उन्होंने लेट क्यों किया? नहीं, हमारा सवाल ये है राकेश जी कि वो जो कमेटी बनाई गई है उसकी रिपोर्ट पब्लिक क्यों नहीं की गई है, और इतना ड्रैग क्यों किया जा रहा है इस सारे मैटर को? नहीं राकेश जी मैं पूछ लूं सवाल, ये इतना मैटर ड्रैग क्यों किया जा रहा है? आपको लग रहा है कि ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं रेसलर्स वो इतने एक्सपेंडेबल हैं कि आप इनको बैठे रहने देंगे सड़क पे? आप नहीं चाहेंगे कि इंटरनेशनल कॉम्पिटिशंस में जाके कम्पीट करें? इतने बड़े खिलाड़ी हैं ये। हमारे देश में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, रोड पे बैठना इनको अच्छा लगता है, लेकिन देश के लिए हमारे दुर्भाग्य है जो हमारे खिलाड़ी यहाँ रोड पे बैठे हैं। ये राजनीति नहीं हो तो क्या है? मैं तो कहूंगा कि इनको उठ के अपने पहलवानी करनी चाहिए, 24 ओलंपिक की तैयारी करनी चाहिए, लेकिन राजनीति का षड्यंत्र, इनकी कुश्ती खत्म हो चुकी है कुछ पहलवानों की। ऑलराइट, ओके अमित, यस प्लीज मेक योर पॉइंट। ऑलराइट राकेश जी, ठीक है, आपकी बात सुन ली मैंने। अब अमित जी को अपना पॉइंट मेक करने दीजिए। यस प्लीज अमित। मैं सिंपल सी सबमिशन ये कर रहा हूँ कि इंसान का फोन चोरी हो जाता है, उसकी भी एफआईआर आप रजिस्टर कर लेते हैं। ये तो सेक्स एलिगेशन लगा रहे हैं, और एक नहीं कई बच्चे लगा रहे हैं। व्हाट इज द हार्म इन डूइंग द इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर्ली? क्यों नहीं एफआईआर लॉन्च हुई? सुप्रीम कोर्ट को क्यों दखल देना पड़ा? एंड फेडरेशंस आर मेड फॉर द वेलफेयर ऑफ एथलीट्स। अगर एथलीट्स की कोई ग्रीवेंसेस है तो उनको सुना जाए, लेकिन यहाँ पे सुना। अब आई डोंट वांट टू कोट वन ऑफ द एथलीट्स, वन ऑफ द इंटरनेशनल एथलीट्स हैव स्टेप डाउन बिकॉज उस पे एक लड़की ने सेक्स एलिगेशन लगाया था। ही स्टेप डाउन बाय हिमसेल्फ। आप रिसेंटली, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, बट दैट इज द डिफरेंस ऑफ एन एथलीट, ए स्पोर्ट्समैन एंड ए पॉलिटिशियन। ईगो इतनी बड़ी मत रखिए। अगर जिन बच्चों के लिए आप खड़े हुए हैं उन लोगों को आप नहीं चाह रहे, अगर वो लोग नहीं चाह रहे आपको। Okay, one final question that I want to ask you, and I want to open it to the panel that I have with me.
Do you think there is so much of politicking that is happening? In this case, there is a clear defense that is coming in from the BJP when it comes to Brij Bhushan Sharan Singh. On the other hand, you have other political parties who are anti-BJP. In this case, the Congress party, the Aam Aadmi party, and also the TMC, who have jumped into this entire spray to actually, you know, seek their own and secure their own political brownie points. How much of that is fair? Jagmati, would you like to take that? Jagmati. Rakesh ji, आप मुझे सुन पा रहे हैं? Can I come in? Yes, yes. The question was for you. Please go ahead. Yeah. Please make a quick point because I'm really short on time on the broadcast now. Yes, I don't agree with you that political parties are there to make their brownie points. No, they are made to protect the citizens of this country, and they should speak out, and they should visit the dharna place, and they should support the sportsperson, wrestlers with all commitment and willpower. And that is what has been lacking in this country. What we see in Haryana, since 3 months, we are fighting against the sports ministers, sexually assaulted. Absolutely. And you know, if you ask me, there's a lot that is amiss, and there's a lot that is lacking in this particular case when it is about the athletes, the wrestlers really launching that tirade against the Wrestling Federation of the country. The least that we can do to actually support these wrestlers who have won laurels for the country is listen to their complaint. And at least the committee that has been set up to actually look into that complaint needs to come out with a report at the onset. And that is something that is required, and that's the need of the hour. We'd have to unfortunately leave it at that. I'm very short on time on the bulletin, but I'd like to thank all my guests who have joined me. Let me